Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Atteeq Anwar, and you're watching my channel, Mohammed Atteeq Anwar, and Education for Us All. Once again, you find us in the kitchen for the segment Cooking Made Simple. So as you can see, there are various ingredients here, namely chicken and tomato, and tomatoes, the various spices, and some chilies to go with it, and yogurt. So you will notice that there is an absence of onions, so it's slightly different. This dish is called chicken tomato karahi, and it is a favorite or speciality of our resident cook, Mrs. A. Jr., so she's going to take over and explain. नाजरीन, जैसा देख सकते हैं कि हम आप एक दफ़ा फिर किचन में हूँ और आज की डिश है जी चिकन टमाटो कढ़ाई। तो ये हमारे रेजिडेंट मास्टर शेफ़ मिसेस ए जूनियर तैयार करेंगी, तो उनसे पूछते हैं कैसे इसका तरीका है। Okay, we're told it's a very simple dish, so she कैसे बनेगी जी? हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। तो चिकन को फ्राई करने के बाद हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे और स्पाइसेस ऐड करके इसको दम के लिए रख देंगे। Okay, so as you can see, there's a larger than usual oil going in there, at least 5 tablespoons, so it's very much an oil-based dish. So we're going to let the oil warm there। नाज़रीन, जैसा देख सकते हैं आम से ज़्यादा इसमें ऑयल डाला गया है, 5-6 टेबल स्पून। तो इसे गर्म होने देंगे तो फिर चिकन डालेंगे। Okay, the oil is sizzling, so we can add the chicken to that to fry it. नाज़रीन, जैसा देख सकते हैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। इसको हम अब 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक ये सही से कुक हो जाएगा, फिर हम इसको टमाटर ऐड करेंगे। So as you can see, 5 minutes have passed and the chicken is cooked really nicely. We're going to add the tomatoes now for this kadai dish. Okay. अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा टमाटर चाहिए होते हैं। कितने डाले थे? हमने 7 से 8 टमाटर लिए। 7 or 8 tomatoes there, as you can see, viewers, cut into chunks. How long are we cooking this for now? For 5 minutes. 5 more minutes, then we shall have a look and then add the spices. So as you can see, viewers, we've covered it, and that will speed up the process. नाज़रीन, इस पे हम सील किया है। हमने इसको बंद कर दिया है ताकि 2 मिनट के लिए कुक हो जाए। So as you can see, the tomatoes have cooked really nicely there, and what can I say, watered quite well, so we're ready for the spices. नाज़रीन, अब चिकन और tomatoes cook हो चुके हैं, तो अब spices ऐड करेंगे। And कितनी देर के लिए और कुक करेंगे? 3 minutes. 3 more minutes, and then we shall see if our chicken kadai is ready. Chicken tomato kadai. Okay, viewers, the cooked chicken is cooked nicely there. We're ready for our next ingredient, which I forgot to mention, and that is yogurt. How many spoons of yogurt are we putting in? 2 spoons. 2 spoons of yogurt, and cook it further. How long are we cooking for? For 3 minutes. About 3 to 5 more minutes, and then hopefully it's done. Okay, the chicken is cooked a lot more, and we're ready for our next ingredient, which is chilies. How long are we cooking this for? More 5 to 6 minutes. Okay, we're going to नाज़रीन 5 to 6 minutes और cook करेंगे with the chilies. Inshallah, it will be ready. I don't know whether you can tell the viewers, the oil has risen, the water has evaporated, so we're almost ready. We're going to give it another 2 minutes. So there we have it, viewers, the final product, chicken tomato kadai. We're just going to garnish that with genu freak. नाज़रीन, ये है जी हमारा फाइनल प्रोडक्ट, चिकन टमाटो कढ़ाई। अब हम इसे मेथी से गार्निश कर रहे हैं।
Okay, viewers, so it just remains for me to say thank you. I do hope you're going to try this very simple chicken dish. Until the next time, I say keep watching. Please recommend the channel to all your friends on Facebook and on WhatsApp. Please try to watch the playlists. Until the next time, look after yourselves, look after others. नाजरीन बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों को रेकमेंड कीजिएगा। अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए हमारी ये चिकन टमाटर ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। आपने हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच टाइम देना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।